गुड इवनिंग, खुशामदीद, नमस्ते। ऐसी गर्मी भरी शाम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपकी होस्ट और दोस्त डॉक्टर विनी कांट्रू। मैं एक पल्मनरी क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स में और आपके सामने हर थर्सडे को प्रस्तुत करती हूँ किसी बड़ी डिग्निटरी को, किसी बड़े डॉक्टर को, जो आपके सामने किसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आते हैं और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज का भी जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली कोविड एरा के बाद जब लोग भी अपने लंग्स का केयर करने लगे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने हेडलाइंस ऑफ द डे पे। लेट्स गो टू द हेडलाइंस ऑफ द डे। National Institute of Health supported a study which showed that severe lung infection during COVID-19 can also cause damage in the heart. ये चीज़ हम पहले से बताते आ रहे हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है, जो हमारे अंदर हार्ट और वेसल्स का सिस्टम है, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है कोविड की वजह से और उसी के रेपरकशंस कई बार हम देख रहे थे। पेशेंट्स के अंदर क्लॉटिंग का मैकेनिज्म काफ़ी इससे सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण जगह जगह पे बॉडी में क्लॉट बनते हैं। लेकिन इसको काउंटर करने का तरीका यही है कि आप अपनी हाइड्रेशन बराबर रखें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें और अपने वेट के ऊपर भी ध्यान दें। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, तो ये लाजमी है कि हम सबको अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। ठंडी चीज़ें लेनी चाहिए, खीरा खाना चाहिए, सैलड्स लेनी चाहिए, हैवी मील्स अवॉइड करने चाहिए और लिक्विड इनटेक किसी भी फॉर्म में, कोकोनट वाटर, नींबू पानी, लस्सी वगैरह, इन सब के अंदर आप ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स काफ़ी होते हैं इन चीज़ों में। Signs of vitamin K deficiency that can affect the lung health, raising risk for COPD, asthma, and wheezing. This has been opined by every of the experts who have studied these vitamins in detail. हमें ये चीज़ भी पता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ऐसी कई सारी पल्मनरी डिजीजेस है और एलर्जीज है जो बॉडी में एक्टिवेट हो सकती हैं। हमारे अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स का होना बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि हमारे अंदर जितनी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें ये ट्रेस एलिमेंट्स, मिनरल्स वगैरह यूज होते हैं। अपने बॉडी का ध्यान ज़रूर आप रखें और जैसे मैंने कहा कि जिन चीज़ों में ये सारे जो एलिमेंट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं उन चीज़ों का सेवन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। विटामिन डी जो है हमारे इंडियन सब्जेक्ट्स में पाया गया है कि ये कम बनता है क्योंकि हमारा सन का एक्सपोजर कम होता है। मोस्टली हम सन से छिप के इसलिए भी रहते हैं क्योंकि इतनी स्कॉचिंग हीट में सन में बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। Study links acute exacerbation of idiopathic interstitial pneumonia to lower survival in advanced lung cancer patients undergoing chemotherapy. जिन लोगों को अनफॉर्चुनेटली इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती है उनमें कीमोथेरेपी की टॉलरेंस जो है वो कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये ऐसे भी लोग होते हैं जो लंग कैंसर के प्रोन होते हैं क्योंकि जो लंग में स्कारिंग बनती है उस स्कार टिश्यू में एबनॉर्मल टिश्यू बनना बहुत ही कॉमन हो जाता है कुछ समय के बाद और इसमें हमारे जेनेटिक फैक्टर्स भी काम आते हैं। New research highlights the potential of rituximab in treating severe and progressive interstitial lung disease, particularly in cases of autoimmune interstitial lung diseases. Autoimmune जो हमारी diseases होती हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वहीं दूसरी तरफ और तरीके के आर्थराइटिस है, वैस्कुलाइटिस है, ये ऑटोइम्यून डिजीजेस होती हैं जो लंग में फाइब्रोसिस करती हैं और इन्हीं केसेस में देखा गया है कि रिटुक्सिमैब जो एंटी-CD20 होता है वो काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। Sanford Bismarck now offers ion technology, a robotic assisted platform for minimally invasive peripheral lung biopsy. काफ़ी कुछ इनोवेशन आ गया है पेरिफेरल लंग बायोप्सी के लिए, अल्ट्रा थिन ब्रोंकोस्कोप्स, वहीं दूसरी तरफ जो कोर बीम टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एक 3D पिक्चर के फॉर्म में ये पेरिफेरल लीजन्स देख पाते हैं। कोर बायोप्सी इनकी लेते हैं काफ़ी ज़्यादा यंत्रों के द्वारा जिसमें कि क्रायो बायोप्सी भी आती है। तो इन चीज़ों से बायोप्सी लेना इन पेरिफेरल नोड्यूल्स का यानी कि लंग के
आउटर वन थर्ड में जो ये लीजन्स बनते हैं अब काफ़ी आसान हो गया है, और इसी टेक्नोलॉजी में एक एडिशन होने वाला है जिसे आयन टेक्नोलॉजी कहते हैं। जब ये आती है तब हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक ऑफ द डे पे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है, सब लोगों को जानने की इसकी ज़रूरत है, क्योंकि यदि ये अर्ली स्टेज पे पकड़ा जाता है तो आगे डैमेज हम रोक सकते हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल निमोनियाज, यानी कि लंग में कई कारण होते हैं स्कारिंग होने के। उसमें कुछ नोन कॉजेज होते हैं, कुछ अननोन कॉजेज होते हैं। जहाँ पे कॉजेज नहीं पता होते उसे इडियोपैथिक कहा जाता है। और यही डिस्कस करने के लिए मैं बुलाती हूँ आज डॉक्टर प्रशांत प्रकाश को। Thank you, Dr. Vinny, and thank you for the very kind introduction. And of course, you have touched upon a very interesting topic, idiopathic interstitial pneumonias, which were considered a dreaded disease until a very short period of time. And second of all, there was a broad categorization of idiopathic interstitial lung disease. It's only very recently that हम लोगों ने ये realize किया है कि this is not just a conglomerate of one disease, it's a conglomerate of around about 150 diseases, and all differing in their prognosis, all differing in their treatment, and as you very well emphasized, that all everything depends upon how early we diagnose it. जी, डॉक्टर प्रशांत प्रकाश के बारे में मैं बता दूं, ये बहुत ही रेवर्ड पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। सर जो हैं, ही स्टैंड्स एज अ डिस्टिंग्विश्ड फिगर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, notably as the professor and head of pulmonary and critical care department at the SN Medical College, Agra. With a wealth of expertise and experience, Dr. Prakash is renowned for his contributions to advancing pulmonary and critical care practices. His dedication to excellence in teaching, research, patient care has significantly influenced the medical community, making him a respected authority in his field. और सर को हम अपने इंस्टीट्यूट में काफ़ी बार बुलाते हैं हमारे बच्चों का एग्ज़ाम लेने के लिए। हम काफ़ी चाव से एक दूसरे से मिलते हैं, और जब भी मैं इनसे मिलती हूँ कुछ नया सीखने को मिलता है। आज भी हम इनसे बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। जैसे सर ने बताया, इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल निमोनियाज। हम सर से पहले पूछते हैं कि ये इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल निमोनियाज क्या होता है और आज हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। Well, first of all, the introduction was very, very magnanimous, right? ना तो मैं इतना famous pulmonologist हूँ, and I believe I'm just a very emerging pulmonologist. And as far as learning is concerned, I think I learn from you and Dr. Kanwar far, far more whenever I come as an examiner to Apollo. So anyway, as far as idiopathic interstitial pneumonias is concerned, I believe that we have made quite a few advances, and in our last document of 2020, published in Lung India, which was a joint statement by Indian Chest Society and National College of Chest Physicians, they broadly classified the interstitial lung diseases into two types. One is the known category, the other is the unknown category. The known category was those in which we knew the inciting agents, such as pneumoconiosis, such as hypersensitivity pneumonitis. The sarcoidosis is not exactly something which we know what incites it, but still it is a distinct entity in the form of granulomatous ILD. And fourth is connective tissue ILDs. And the second category was the unknown diseases, in which they comprised of approximately 6 or 7 diseases: idiopathic pulmonary fibrosis, non-specific interstitial pneumonitis, then smoking related ILDs, then acute ILDs,
and then lymphoid interstitial pneumonia. Now, the whole crux of the classification was that anything which you label as idiopathic interstitial pneumonia, you have to rule out all the secondary causes, because essentially, whether it is idiopathic interstitial pneumonia, they are broad histological types. Like IIPF is basically a UIP pattern, a histological UIP pattern. NSIP is a histological pattern, and cryptogenic organizing pneumonia is a histological pattern which can occur in a number of diseases such as hypersensitivity pneumonitis, connective tissue ILD. So the basic criteria where we have to do is that first of all, we have to identify and rule out all the secondary causes. And why we have to do it in medical profession, we always have a why, right? Right. So the why is very simple, that what has been seen is that if these patterns occur in a systemic disease background, whether it is CTILD or in a hypersensitivity pneumonitis, they carry a far better prognosis. And the idiopathic interstitial pneumonias are relatively having a poorer prognosis. Of course, idiopathic interstitial pneumonias, the seven types, they in itself differ in prognosis themselves. But versus these secondary causes, they definitely have a worse prognosis. जी सर, मोस्ट डेफिनेटली सर। सो सर का जो एक हिंदी अनुवाद है, मैं सरल भाषा में ये बताना चाहूँगी उन श्रोताओं के लिए जो हिंदी में समझना चाहते हैं कि हिस्टोलॉजी से मतलब होता है जो माइक्रोस्कोप के नीचे हमारे पैथोलॉजिस्ट फ्रेंड हमारी बायोप्सी देखते हैं, उसके अंदर कई तरह के पैटर्न्स होते हैं और इनके मेडिकल टर्म्स यूआईपी, सीओपी, एनएसआईपी जैसे नाम इनको दिए जाते हैं, जिसका मतलब होता है यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया, नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया या फिर क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया। तो ये तो बात रही बायोप्सी की पिक्चर की, जो कि हम सीखते हैं कई सारी बायोप्सीज को देखने के बाद। और यदि ये इस तरह के चेंजेस होते हैं किसी भी लंग बायोप्सी के अंदर, तो इसके कुछ नोन कॉजेज होते हैं, कुछ अननोन कॉजेज होते हैं। और इडियोपैथिक का मतलब जैसे अननोन होता है, तो इसी वजह से हम ये 7 कैटेगरी की आईएलडीज को इडियोपैथिक मानते हैं। और यदि हम इसको कंपेयर करें नोन कॉजेज के साथ, तो इनकी जो ओवरऑल प्रोग्नोसिस होती है, यानी आगे जाके ये डिजीज प्रोसेस किस तरह से बिहेव करेगी, वो बहुत अच्छी नहीं होती है कंपैरिजन में। लेकिन आजकल कुछ ऐसी मेडिकेशंस हमारे बास्केट में हैं जिनकी वजह से हम फर्दर प्रोग्रेशन कई बार रोक पाते हैं, थमा पाते हैं। जो ऑलरेडी चेंजेस है वो नहीं थम पाती, लेकिन आगे की चेंजेस हम कई बार रोक पाते हैं। तो आगे का हम जो प्रोसेस है, सर से पूछेंगे कि क्या कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं ऐसी डिजीजेस के, या कोई हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, या ये जीन्स के अंदर ही होती हैं, और किस तरीके से किस तरीके के टेस्ट से हमें पता लगता है, और क्या सिम्टम्स हमारे अंदर पनपते हैं जब हमें शक होना चाहिए कि हमें एक पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है, एक सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत है। Well, सबसे पहले तो when it comes to ILD basically is, first of all, the most prominent symptom तो dyspnea है, right? Second prominent system cough है. Third prominent system you can say chest pain है ना? Fourth common symptom expectoration है. And then when we are suspecting other causes, then we have a host of symptoms, whether skin changes हैं, whether eye changes हैं, whether joint problems हैं, which will give a clue to it कि whether we are dealing with a systemic disease or not. For example, sarcoidosis है. Sarcoidosis की old definition ये है
कि basically there should be at least involvement of two organ systems, and in which at least one में granulomatous pattern हम लोग demonstrate करना है ना. So that is basically uh, the older definition of sarcoidosis. Of course this has changed now, but these are the things. Now, when you come to inciting agents, inciting agents, hypersensitivity pneumonitis, occupational lung disease, इसमें तो हमें inciting agents मालूम है. We are very clear about the inciting agents. Occupational lung diseases में coal workers pneumoconiosis है तो वो coal है, asbestosis है, silicosis है, hypersensitivity pneumonitis में तो there's a whole long list of it. Then drug-induced or radiation lung diseases, they are also interstitial lung diseases. Again, we know it. But when it comes to say sarcoidosis is basically, again, we are not very much familiar with it. But yes, sarcoidosis is a distinct pattern. It is basically a granulomatous ILD. And now when we come to idiopathic interstitial pneumonias, which is the topic of the day, here we really are very much in the blind. You know, I have a very funny way of saying things. You know, whenever we label something like something called idiopathic, idiopathic derives from the word idiot. So basically, it's something like probably we really don't know anything about it. Okay. Now, that was on the lighter note. So coming to these 7 idiopathic uh, interstitial pneumonias, the only thing which we have been able to cause an association is that idiopathic pulmonary fibrosis, which is of course the most dreaded and bitchiest disease, has a strong association with smoking, and of course has a familial association. Then the smoking related interstitial lung diseases, which are basically RBILD and DIP, so they have a strong association with smoking. Then cryptogenic organizing pneumonia. Now, अगर cryptogenic organizing pneumonia को हम strictly sense में देखें, तो idiopathic cryptogenic organizing pneumonia तो एक बिल्कुल unrelated है. But when you are talking of a secondary cryptogenic organizing pneumonia, which was at an older time called bronchiolitis obliterans organizing pneumonia, or BOOP. Now that has an association with so many things, with so many connective tissue lung disorders, with so many hypersensitivity pneumonitis, with radiotherapy, with consumption of marijuana, with consumption of so many drugs such as nitrofurantine, etc. But then अगर हम फिर उस पे जाते हैं, तो that is not then our idiopathic cryptogenic organizing pneumonia. Then that is something related to that thing. So when it comes to idiopathic interstitial pneumonias, we are still a little hazy about the causative factors. Correct me if I'm wrong. Most definitely, sir. So in idiopathic, we have many less number of risk factors which have been delineated because we are moving kind of in a blind room, as you rightly said. There is no light in this room because we don't know the causes which incite this process in the lung, and that is why they have been kept in this category of basket, which is the idiopathic interstitial pneumonias. Now, in terms of investigations, what all investigations do we order for these kind of patients? Well, when it comes to idiopathic interstitial pneumonias, first of all, the basic definition of idiopathic interstitial pneumonia, अगर हम एक particular उसको quote करते हैं, तो I would like to quote Fishman कि
uh, as they say that the diagnosis of IIPs requires exclusion of known causes of interstitial lung disease such as drug or inhalational exposure and CTD-ILD. So this is a line taken directly from Fishman's textbook of pulmonary diseases. So here, first of all, we have to be very clear whether this is an idiopathic interstitial pneumonia or this is masquerading as something else. So, first of all, pneumoconiosis will definitely not masquerade like a typical interstitial pneumonia, but hypersensitivity pneumonitis will. NSIP pattern or even cryptogenic organizing pneumonia pattern is known to frequently occur in hypersensitivity pneumonia. So we have to take a very elaborate history about exposure to any of these organic antigens. Second, uh, connective tissue lung diseases. These are the second group of diseases on which we have to elaborate whether we are dealing with this category or not. Now, connective tissue lung diseases carry a gamut of investigations, some of which are very expensive, such as anti-dsDNA, anti-Smith antigen, this, that. So, in this 2020 Indian guidelines for treatment of ILD, said that a basic of at least 3 investigations should be done. One is ENA, second R factor, and third is anti-CCP antibody. So a basic of these 3 investigations should be done. Now, once we have clarified that how this is most probably a idiopathic interstitial pneumonia, our next plan of action would be here the correct approach is basically now what has been elucidated is a multidisciplinary discussion or what is called a MDD pattern of diagnosing. Now, our approach should be minimally invasive. Hai. These days, all pulmonologists, whether it's you, me, or any pulmonologist, he likes intervention. And unfortunately, not every intervention is successful in anything. For example, there are limitations to bronchoscopy. There are limitations to VATS. There are limitations to surgical lung biopsy or SLB as what we say. So let's try to go by the minimal investigative strategy in which some of the idiopathic interstitial pneumonias are very amenable to diagnosis by radiologists such as IPF. Now, IPF is one disease which is quite amenable to diagnosis by just the HRCT, and you really do not need to go gung-ho with the investigative pattern. NSIP, on the contrary, is not so amenable for diagnosis by just an HRCT. In fact, एक ज़माने में, something like 2 or 3 years, we used to say NSIP is a waste basket. जिसकी कोई diagnosis नहीं बने, उसको उठा के NSIP में डाल दीजिए. Then again, when we come to smoking related ILDs, again amenable to HRCT and amenable to transbronchial lung biopsy as well as bronchoalveolar lavage by the demonstration of pigmented alveolar macrophages. So amenable, quite amenable. Cryptogenic organizing pneumonia, again amenable. But when it comes to NSIP and cryptogenic organizing pneumonia, VATS is definitely the better procedure, and sometimes even VATS does not work.
VATS does not work, and we have to go for an SLB or a surgical lung biopsy. So our emphasis should be, although we all enjoy interventions, but our emphasis should be to try to do it as minimally invasive as possible. I don't know if I've been able to do justice to the question. Yeah, definitely, sir. Most definitely, you explained it in a very lucid manner. सर का कहना है कि जितनी भी हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के पेशेंट्स में, जिनमें कि इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल निमोनिया कैटेगरी होती है, सबसे पहले उनके अंदर हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ ऐसे नोन कॉजेज़ होते हैं, कई बार पेशेंट्स इनिशियली नहीं भी बताते हैं। सो उन पेशेंट्स को प्रोब करना बहुत ज़रूरी है कि कोई नोन कॉज तो नहीं है उनकी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का, जिसके कारण कोल हो सकते हैं या कोई और एक्सपोजर होते हैं, जैसे पिजन की जो उनका एक्सक्रीटा होता है, उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जिससे हमारे लंग के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी की चेंजेस आती है। यानी कि हमारा लंग इम्यूनिटी बनाता है उस प्रोटीन के लिए और लंग में चेंजेस आते हैं। वहीं कुछ एनिमल फर्स या कुछ वेजिटेशंस होते हैं जिसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस हो सकता है। तो ये नोन कॉजेज दूर निकालना, बाहर निकालना, उसको छांट के निकालना बहुत ज़रूरी है इडियोपैथिक वैरायटी की तरफ अपना डायग्नोसिस टिल्ट करने के लिए। और सबसे बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन है, एक हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन का होना किसी भी आईएलडी पेशेंट में बहुत ही अनिवार्य है। इसके अलावा यदि पेशेंट का ऑक्सीजन कम है तो आर्टीरियल ब्लड गैस जैसी हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, और 2D इको यानी कि 2 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राफी जो होता है, उनके हार्ट के स्टेटस को जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये सारे इन्वेस्टिगेशंस दूसरी तरफ हमें लंग बायोप्सी की तरफ तब लेकर जाते हैं यदि किसी में NSIP पैटर्न हमें सीटी स्कैन में दिखता है या क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग वैरायटी का निमोनिया हमें सीटी स्कैन में दिखाई देता है। तो ये केसेस जो हैं कई बार बायोप्सी के लिए जाते हैं, जो कि बायोप्सी ब्रोंकोस्कोपिकली भी ली जाती है, और दूसरी तरफ वैट्स यानी वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें एक दूरबीन की जांच से हम दूरबीन के अंदर से बायोप्सी के इंस्ट्रूमेंट डाल के अंदर से लंग बायोप्सी लेते हैं। एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है, लेकिन ये सर्जन करते हैं और पल्मोनोलॉजिस्ट जो हैं वो ब्रोंकोस्कोपी का प्रोसीजर करते हैं। यदि इनमें कोई आंसर नहीं मिलता है तो हमें सर्जिकल लंग बायोप्सी की तरफ जाना पड़ता है कई दफे। सब श्रोताओं से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपके सवाल हैं कुछ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज से रिलेटेड, तो आप ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मैं सर से वो क्वेश्चन पूछने की ज़रूर पूरी कोशिश करूंगी। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमने डायग्नोज कर One दिया है more, किसी भी I may just like to add one more thing, that if you have extensive honeycombing or an end stage fibrotic lung, one small exhortation to my pulmonologist colleagues is, then there is really no sense of doing anything bronchoscopically, because ultimately then we are not going to get any diagnosis. We are just going to get an end stage fibrotic lung. ये बहुत अनिवार्य है हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट फ्रेंड को जानने के लिए कि यदि आपको सीटी स्कैन में आईपीएफ जैसी पिक्चर दिखती है, इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, तो इस डायग्नोसिस के लिए हमें कुछ चेंजेस सीटी स्कैन में ही मिल जाती हैं, जो अपने रेडियोलॉजिस्ट फ्रेंड के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। इनमें जो हमें है हनी कोमिंग मिलती है, यानी हनी कोम जो होता है, जो बी होती है अपने हनी कोम्स बनाती है हनी स्टोर करने के लिए, उसी तरीके की स्टैकिंग ऑफ सिस्ट चेंजेस होती हैं लंग के अंदर जो सीटी स्कैन में दिख जाती हैं, और उसके साथ एसोसिएटेड होती है ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टेसिस, यानी कि जो सांस की नली है वो इस फाइब्रोसिस में फंस के थोड़ी डायलेट हो जाती है, जिसे ट्रैक्शन का नाम दिया जाता है। ब्रोंकिएक्टेसिस यानी कि जो सांस की नली है वो सूजी हुई है या फैल गई है। तो ये चेंजेस यदि आपको सीटी स्कैन में दिखाई देते हैं तो डायरेक्टली आपका डायग्नोसिस आईपीएफ की तरफ झुक जाता है, और इन केसेस में बायोप्सी करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इसमें
केवल और केवल फाइब्रोसिस ही दिखती है। और ऐसा देखा गया है कि बायोप्सी का इसके अंदर ट्रीटमेंट पे कोई चेंज नहीं पड़ता। तो यदि सीटी स्कैन में डायग्नोज हो जाता है तो बायोप्सी की तरफ यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया की पिक्चर को नहीं करें। So we will go towards the treatment of interstitial pneumonias, especially the idiopathic varieties. So what do we have in offer in our basket of treatment for patients who have been diagnosed with idiopathic interstitial pneumonias? Am I to answer the question? Yes, sir. Yeah. So basically, when it comes to treatment, today we have a gamut of drugs. I would like to divide it into antifibrotics and fibrotics, the immunosuppressants or the cytotoxic drugs. So antifibrotics, strictly speaking, RGB basically this is for IPF. That is my feeling. Or what has now come as a recent statement is that there are now certain non-IPF conditions which have reached a fibrotic condition in which we can go for these antifibrotics, and the antifibrotics are basically two, pirfenidone and nintedanib, and there are certain strict conditions during which we are using them. They will be maximum beneficial agar post vital capacity is more than 50%, and it's then that they are beneficial. Second of all, we have to judge while starting an antifibrotic. Suppose in a year, if the FVC is declining by more than 10%, we should either continue the antifibrotic or we should change the antifibrotic. जो latest studies हैं as far as combining N-acetylcysteine with antifibrotics, we have no clarity on them. As far as combining corticosteroids with antifibrotics, again we have no clarity upon them. And as far as combining the two antifibrotics, pirfenidone and nintedanib, again we have no clarity on them. तो इतना क्लियर है कि antifibrotics to be used in IPF, they're definitely not supposed to be used in what I saw post-COVID epidemic, that people were using it in post-COVID fibrosis. है ना? So that is definitely not a scene in which to be used. Yes, a certain guideline has come that when the non-IPF conditions, if they reach a stage of PPF, progressive pulmonary fibrosis, these drugs may have a role. But strictly speaking, IPF, if I come to NSIP, NSIP may be NSIP corticosteroids help. Corticosteroids help, and that too, NSIP is of basically three types, as we all know: cellular NSIP, fibrotic NSIP, and mixed NSIP. So basically, we'll always be very happy to deal with the cellular NSIP, where basically our corticosteroids would help or cyclophosphamide would help. Coming to the smoking related ILDs, RBILD and DIP, again, here our smoking cessation would help very much, and a combination of smoking cessation and corticosteroids would do all the more better. So they are having a better prognosis, although here also the prognosis is slightly different. Respiratory bronchitis, ILD, is having a better prognosis to the tune of a 67% survival, while desquamative interstitial pneumonitis is having a worse prognosis.
Then coming to the acute interstitial pneumonitis, जिसमें दो आते हैं, cryptogenic organizing pneumonitis and acute interstitial pneumonitis. Acute interstitial pneumonitis is, of course, one of the worst disease. It's just almost like an ARDS, right? Yes, survivors do have very good chance. And cryptogenic organizing pneumonia is again very amenable to basically corticosteroids and cytotoxic drugs. Now, this comes with a cat situation. When I am trying to talk about this situation, it seems that idiopathic interstitial pneumonias is all rosy, rosy. It's not like that. It's not all rosy, rosy. It's that there are subtypes in every idiopathic interstitial pneumonia which are amenable to treatment, and there are certain subtypes which are not amenable to treatment. And of course, this goes without saying that the ILDs who are not idiopathic interstitial pneumonia, such as hypersensitivity pneumonitis, pneumoconiosis, sarcoidosis, CTILD, of course, they have a much better prognosis. Drugs virtually remain the same, except no antifibrotics to be used in this. And drugs remain the same, but the prognosis is much better. Right, sir. Very well explained, and it was very, very lucid explanation for all the treatment modalities which are there in idiopathic interstitial pneumonias. So, now that we have the facility of lung transplant in our country, so are there any candidates out of these idiopathic interstitial pneumonias who qualify to be, qualifying for the lung transplant? And what are the criteria if somebody is eligible for lung transplant? Look, lung transplantation is definitely a viable option, but somehow or the other, I still take it with a pinch of salt. I still take it with a pinch of salt, and I would always advise a lung transplantation with in which the FVC has gone dramatically low, the DLCO has become dramatically low, oxygen requirements are very high, and somehow or the other, because basically these patients, they always and generally have a pulmonary hypertension and a pulmonale established. So, I mean, I still, this is, I, in a corporate world, you are gung-ho about transplants. Pardon me for saying so. But when you are sitting in a not in a city which is not a metro, right? You have to take things with a pinch of salt. And I think just a lung transplant in a case of advanced ILD is not probably the basic solution. You should then go for a heart and lung transplant. Very rightly said, sir. We have Noor Aga Danish ji, who is connected to us. He is asking, clinically, how do we differentiate between COPD and interstitial lung disease? Well, that is very clear. COPD is an obstructive lung disease, and ILD is a restrictive lung disease. This is a very basic difference. However, yes, things can start blurring because sarcoidosis has a lot of airway involvement, and DLCO would tell you a lot about uh, DLCO would tell you a lot about differentiation between a COPD and an ILD, and the final differentiation between a COPD and ILD is always by an HRC. No doubts about that. HRCT is going to tell you whether you have an emphysematous pattern or a COPD pattern, right? While HRCT will tell you
whether you have an ILD or you don't have an ILD. Rest all evidences are supported. Right, sir. Pawan Gupta ji is asking role of any respiratory exercise. Well, definitely there are now pulmonary rehabilitation programs, and pulmonary rehabilitation programs are, you have a separate exercises for obstructive lung disease, you have separate exercises for restrictive lung disease. But now, what does pulmonary rehabilitation attain? We have to understand that pulmonary rehabilitation attains a better quality of life. There is no doubt about it. But if you are talking in terms of the long term prognosis, I doubt it. Because the moment you stop a pulmonary rehabilitation program, you are back to square one. That is number one. It does not help in the long term survival, but definitely helps in the uh, Coping up quality with the of disease. life. Definitely helps in the quality of life. And as we know that we have got a separate pulmonary rehabilitation program for obstructive lung diseases and a separate one for restrictive lung diseases. Right, sir. Are there any immunizations which should be taken care of in patients of Of interstitial course, lung disease? all respiratory patients, COPD or old age bronchial asthma, interstitial lung diseases, sure, they're all regular candidates for pneumococcal vaccination, for flu vaccination, and all possible precautions. Right, sir. People often have this fear in their mind that if they are started on steroids for any of their lung condition, they will get a lot of side effects. So, how should that be addressed? Well, that is a difficult question to address because you definitely steroids are going to have side effects. But then you have to convince them that you can't make do without them if they really are. Second of all, the strategy as far as steroids is concerned is to bring them down to a minimum dose as much as possible. As much as possible. And we can do that very successfully when it comes to CTILDs. We can do that very successfully in sarcoidosis and hypersensitivity pneumonitis. We can do that very successfully provided we find out the inciting agent and avoid exposure. But again, when it comes to idiopathic interstitial pneumonias, again the situation becomes very tricky. Right, sir, because we don't have any clarity in terms of idiopathic interstitial pneumonias. So it was a very, very insightful session with you today on interstitial pneumonias, especially the idiopathic varieties. We learned a lot about this disease, how to identify it, what are the common investigations which are ordered, what is there in terms of treatment. We thank you from the bottom of our heart for this session today and taking up your valuable time and sharing it The with feeling us. is mutual. The feeling is mutual. I think you know more about ILDs than I do because you're working at a much better center, right? And the feeling is very much mutual, and we're looking forward to you whenever I come for your exams. Yes, sir, surely. Yeah. So we have this token of appreciation, a small certificate for sparing your valuable time with us. My colleague Shriyon is going to show this certificate. Thank you so much, Dr. Prashant Prakash, for Thank you so spending this much. time Thank with you. us. We had an Thank, insightful session today. thank you. Thank you. Thank you. सो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में हम आप लोगों से मिलेंगे, कुछ नया टॉपिक के लेके, कुछ नए लोगों से मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद। Thank you.